Thank you to all of you guys for coming here and covering one of the biggest news of Maharashtra, especially in healthcare. I would like to first mention about our leaders, clinical leaders here who are sitting here, and because of them, I think we are starting this AI prevention model in Jaslok. But before talking about what is the product, how it is going to happen, it's important to talk about what are the challenges we have right now. So if you see currently, one of the core challenges that we have in Indian medical system is it's symptom-driven approach. Patients do not go to doctor unless they have symptoms. So doctors are trained and expected to treat those symptoms instead of, and then they have to relieve those symptoms quickly. But overall, they're missing out the underlying conditions. So prevention is extremely important for everybody, and Angina X is leading that, working with Jaslok partnering with Angina X on specifically AI-driven cardiology prevention model, Maharashtra's first model, and I would like to talk about that later on, but I would like Dr. HIMANSHEE sir, who is leading this effort, and he should be able to talk about that program as well. Thank you. I would say the absence of symptoms is not the same as absence of disease. Number of times I've seen that the people get the startling news that they have hypertension or diabetes when they get their insurance checkup done. So therefore, we realize that both hypertension and diabetes can continue to damage your health without your knowledge, uninterrupted. Can we prevent? Certainly, not prevent, at least postpone by controlling diabetes and hypertension, provided you know it. When we talked about sudden cardiac death, and when we came to know that a lot of people, especially startlingly more in the recent past, that one Dr. Prasanna Naidis, the director of cardiology at KEM Hospital, dropped dead soon after the coming back from gym. I don't remember the name, but 23-year-old girl, while she was performing dance on the stage. We are extremely grateful that you have made it here, because the program which Jaslok Hospital is going to launch is something very, very important. In the sense, just to give you an idea, almost about 250 people die of a heart disease every hour in India, are occurring below the age of 40 years. This is the statistical data which is being presented as far as India is concerned. And of all non-infective deaths in the country, almost about 70% are because of heart disease. So you can understand that the problem is humongous, and we know that prevention is the best way of taking care of any disease problem. And what we are trying to do with the Jaslok Hospital along with Angina X is to screen the patients who are at a higher risk or a moderate risk or lower risk cardiac profile, as we call it. The ECG, the lipid profile, the blood sugar, and an ECG and the other things, which will make them, as well as certain examination of the patient as far as what is his history, whether he had in the family history of any heart attacks or not, whether he is a smoker, whether he is having tobacco or not. And on these basis, basically on the basis of the cardiac profile, we will be able to identify these patients as to who are going to be at a high risk or moderate risk, and accordingly we can advise them
with medications or with further investigation to take care of themselves. So this is the first program which is being implemented in the state of Maharashtra, and Jaslok has taken the initiative to implement it here, and we are extremely keen to see that it is implemented in the best possible way with the help of your assistance for promoting this particular aspect of the prevention of Our Chief Medical Officer, Dr. Milind Khadge, to let us know about how does it work together with Jaslok. Thank you for being here. I'll share a few words. Of course, Dr. Pradeep has already given a lot of details about it, but I'll say that Jaslok has 52 years of legacy of care, compassion and excellence in treating patients with complex diseases. But we also focus on prevention of those diseases, and our focus has been very much prominent on prevention, and collaboration with Angina X is one such example. In fact, there was a lot of data that Dr. Mehta spoke, but cardiovascular diseases is currently the biggest killer currently in India. And if you see, most of the deaths are, most of those patients are below 50 years of age when they get those cardiovascular diseases. In fact, if we compare to the Western countries, we are a decade earlier to get all those cardiovascular diseases, and that is when the most productive period of the life is there, and hence it is important to go into the prevention mode rather than the treatment part. And this collaboration will help us understand the biological and the social determinants of early heart disease and their interaction as to enable us to prevent significant number of casualties due to heart attacks. And with this AI-powered tool, we will be able to convince the patient for early intervention to modify lifestyle or start treatment and for preventive purposes. So, in short, we prefer patients coming to our OPD rather than to the emergency medical service. Okay, Naman. Yeah. He will elaborate the help of artificial intelligence in detection and score system. Yeah. Thank you, sir. So, Angina X AI is an intelligent healthcare system that fits on top of every single doctor's office. So it's like a, it's powered by artificial intelligence. Has, currently medical establishments are using Framingham heart study, common traditional biomarkers for cardiovascular assessment, which is hypertension, diabetes, a smoker, tobacco, all those things. Those are not enough biomarkers. Science has advanced, so we have incorporated scientific research in this system. So it's not just an AI, it's a convergence of biomedical research, clinical science, precise medicine, and also artificial intelligence technology working together to precisely detect patient's insight before patient comes into doctor's office. So how it works? When patient's data is entered in the system, doctor will have insight of that patient's silent risk, metabolic dysfunctions, other lifestyle patterns as well, not just the typical cardiovascular traditional markers, but all of those, and provides detailed assessment, providing patients clear trajectory path where he is headed. And so if you think about a patient is normal today and tomorrow he collapses, is 24 hours, what if we stretch to 24 years? And doctor can see that, visualize that, is this patient is heading towards up or down, and puts the halt on the progression of those cardiovascular disease and treats that, whether treatment is for lifestyle patterns or treatment is for medication or even other kind of treatment or further investigation. All those things happens way before symptoms arrive. That's how we're going to prevent life. So it's not really predicting heart attack, it's preventing heart disease way before symptoms arise. सर नमस्कार, पहले आपको थोड़ा परिचय दीजिएगा। सो मेरा नाम नमन गोसालिया है एंड हमारी टीम एंजाइना एक्स टीम का एक मिशन है कि हम पूरे इंडिया में प्राइमरी प्रिवेंशन एवरी सिंगल स्ट्रीट
एवरी कॉर्नर, एवरी क्लिनिक में रखें और डॉक्टर को अपनी प्रैक्टिस डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रैक्टिस के अंदर एक प्राइमरी प्रिवेंशन यूनिट होना चाहिए। सो हमारा अर्ज यही है डॉक्टर्स के साथ कि आप अपनी ये जो सिम्टमेटिक बेस्ड जो क्लिनिक है अप्रोच है उसके अंदर आप प्राइमरी प्रिवेंशन भी डालो ताकि लोग अपने हेल्थ चेकअप के लिए आ सके। और AI ड्रिवन सिस्टम है, सो वो पर्सनलाइज प्लान डिटेक्ट करता है, लोगों की हेल्थ चेकअप पहले समझ आ जाती है और ये मोर ऑफ अ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए है टू प्रिवेंट कि हार्ट की कोई बीमारी ना हो जाए। अच्छा, एक चीज़ जानना लोगों के लिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए भी। ऐसा कौन सा सिम्टम आता है जिसके बाद हमें टेस्ट करवाना चाहिए? सी हमारे डॉक्टर्स, एंजाइना एक्स के डॉक्टर्स ऐसा बोलते हैं और हमारी पूरी टीम ऐसे बोलती है कि आपको कोई सिम्टम्स आए उसके बाद डॉक्टर के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सिम्टम्स आना ही नहीं चाहिए, आप पहले से डॉक्टर के पास जाओ। ये फियरलेस मॉडल है। यहाँ आपको कोई इक्विपमेंट नहीं है, ना ही कोई सर्जरी हो रही है। आपके सिर्फ इन्फॉर्मेशन और आपके जो ब्लड वर्क रिपोर्ट है उसके कॉम्बिनेशन को करके आपका एक ट्रीटमेंट प्लान होगा। ऑफ कोर्स आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि अगर आपको ये ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना है, यार अपने दूसरे डॉक्टर के साथ राय भी ले सकते हो। बट इससे क्या होगा कि आपकी जो सिम्टम्स जिसका आप वेट कर रहे हो उसकी वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों सिम्टम्स लाए, उसकी नौबत क्यों लाए? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जो हार्ट अटैक है उनके सिम्टम्स कौन से हैं? चेस्ट पेन, उसको एंजाइना बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, है ना, सांस की तकलीफ, ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स आ गए तो बाय द टाइम वो बहुत लेट हो गया जी। हमें उसका वेट करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। हम सबको साल में एक बार या एटलीस्ट 1 in 6 months अपने हार्ट हेल्थ की चेकअप करवानी चाहिए। एंजाइना एक्स एक डिटेल रिपोर्ट लेके आता है जो डॉक्टर्स को हेल्प करता है। स्पेसिफिक बायोमार्कर्स, स्पेसिफिक लिपिड प्रोफाइल, स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और बड़े सारे मेटाबॉलिक हेल्थ मार्कर्स है वो भी इंकॉर्पोरेट करता है। आपकी फैमिली हिस्ट्री चेक करता है, आपके CKD मार्कर्स चेक करता है। सो एक्सरेंट लिपिड प्रोफाइल्स, वो सारे मार्कर्स को पुट टुगेदर करके आपकी बॉडी का एक प्रोफाइल बनाता है जो हर बॉडी के लिए अलग अलग होता है। सो डॉक्टर के सामने आता है ताकि डॉक्टर एक प्रॉपरली असेस कर सके, राइट डिसीजन ले सके बहुत पहले सिम्टम्स आने से पहले, ताकि आपको कभी सिम्टम्स। ये सर एक चीज़ जानी थी, ये जैसे एक एंजियोग्राफी टेस्ट होता है या हार्ट के जो डिजीज़ के पहले होता है, ये उससे मिलता जुलता है, उसी चीज़ को बताता है? क्या बताता है इसका रिपोर्ट? सी एंजियोग्राफी, CT एंजियोग्राम वगैरह, वो अगर आपका कोई रिस्क हो डॉक्टर डिसाइड करे, वो डॉक्टर करता है। हम रेकमेंड करते हैं तभी डॉक्टर को जब वो रिस्क प्रोफाइल वैसी हो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब बहुत सारे टेस्ट है हार्ट के, सब तो रेकमेंड नहीं कर सकते ना सबके लिए, तो ये स्टेप बाय स्टेप इंटरवेंशन है। ओनली जब डॉक्टर डिसाइड करेंगे कब इस पेशेंट को कौन से इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करवाने हैं। द पॉइंट इज़ हर पेशेंट की बॉडी अलग अलग है। यस। और किस बॉडी को कौन सा इन्वेस्टिगेशन करवाना है, कौन सी रिस्क प्रोफाइल है, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। हम सिर्फ डॉक्टर को दिखा रहे हैं उस बॉडी की बहुत सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन जिससे डॉक्टर डिसाइड कर पाएगा कि वो कौन से ट्रेजेक्टरी में पेशेंट जा रहा है, कितने दूर तक जा रहा है, कहाँ उनके रिस्क है, कौन सी रिस्क प्रोफाइल आ रही है। और ये एक बार नहीं है। अगर आपका रिपोर्ट हुआ आप लो रिस्क में है, आप साल के बाद एक बार फिर से आ रहे हो आफ्टर 1 year, उसके बाद आपका नया रिपोर्ट कैसा आ रहा है, तो वो दोनों आपका पुराना और नया रिपोर्ट कंबाइन करके भी आपका कौन सा रिस्क आ रहा है वो आएगा। तो इट्स अ वेरी मच स्ट्रक्चर्ड, बहुत स्ट्रक्चर्ड रिस्क प्रोफाइल प्लान है जो डॉक्टर्स को ही विजिबल है, पेशेंट के लिए नहीं। इट्स अ डॉक्टर। सवाल आपसे पूछूँगा, ये टेस्ट मुंबई में कहाँ उपलब्ध है और इसकी जो कॉस्ट होती है कितनी पड़ती है? देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ 20-25 टाइप बायोमार्कर्स जो टेस्ट है वो हमारे एंजाइना एक्स में डाली है और डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि उनको आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं। बायोमार्कर्स, लिपिड टेस्ट होती है, इन्फ्लेमेटरी टेस्ट होती है, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन वाली टेस्ट होती है, आपकी फैमिली हिस्ट्री वाली होती है। ये सारी टेस्ट एक साथ करवा के आप कोई भी लैब में जा सकते हो, सारी लैब टेस्ट ये करेगी। हर लैब के अलग अलग कॉस्ट होंगे। जिस लोग अपना कॉस्ट करेगा वो बहुत लोअर कॉस्ट है, बट जिस लोग ऑल्सो ओके है कि आप कहीं से भी करवाओ, आपके पास ऑलरेडी अगर ये उसमें से आधी टेस्ट ऑलरेडी है तो वो भी चलेगा। गोल ये नहीं है कि आप टेस्ट कहाँ करवाओ, किस से करवाओ,
किस डॉक्टर से मिलो। गोल ये है कि आप बस अपना एक बार टेस्ट करवाओ कि देखो कि आपकी रिस्क प्रोफाइल कब है, ताकि आपको कोई एंजाइना या कोई चेस्ट पेन वाला सिम्टम्स ना आए, और आने से पहले आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल पता होनी चाहिए कि डॉक्टर कैन ऑल्सो प्रिवेंट दोज मार्कर्स, पहले से प्रिवेंट कर सके वो मार्कर्स। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू।